The name of the chapter is rotational dynamics or rotational motion, whatever we call it. Mechanics of rotational motion. सबसे पहला section which I'll be dealing with today is moment of inertia. So whole section I'll be dealing with moment of inertia. Then on Wednesday you can see the second lecture and come, and then we'll deal with torque and angular motion and everything. Okay, it is very important to watch the video because theory, if you see, then okay, it will be revised, and numericals I'll do then. So what is moment of inertia? Defined as moment of inertia is the resistance to rotational motion. Can I say it is analogous to what? Mass in linear motion. Can I say whatever role mass plays in linear motion, moment of inertia plays in rotational motion? These 2 points are very, very important. Third, MI depends upon first very important thing, that is distribution of mass with respect to axis of rotation. So if the mass is distributed away from the axis of rotation, moment of inertia is more difficult to start and difficult to stop. And if the mass is distributed near to the axis of rotation, moment of inertia will be less easy to start and easy to stop. Baba, hello. Are you all aware of all these things? We have done this in the theory. Hello. It depends on mass of the body also. And third, it depends on orientation of the axis of rotation. MI depends on three things. ये important है बात. Okay. अभी MI निकालने के अलग अलग तरीके. I'll teach you the methods to remove MI, moment of inertia. Today, as I told you, lecture number 1 will be based on moment of inertia only. Okay, basic theory आपको आना चाहिए ये. Okay, it was done in the HSC part also. So can anyone tell me what is MI of a single particle? Hello, please respond. So suppose there mass is a into distance. yes, M, distance is D, about this given axis. अगर आप इसको घुमा रहे हो तो moment of inertia of the single particle will become mass into distance square from the axis of rotation will become m into d square या m into r square, जो भी आप बोलते हो. This is for single particle. If I tell you what is system of particle के लिए मांगता है तो is m1 r1. Similarly mn sorry rn. Moment of inertia will become m1 r1 square as dot 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 mn rn square. We can write this as summation of mi ri square, where I is ranging from 1 to n. Did you understand? And the unit of this whole thing will become kg meter square. System of particle, SOP. बहुत सारे particles हैं. This is for single particle. Similarly, if I need for a rigid body, ये कोई भी एक rigid body है. This is the axis on which I need to find moment of inertia. तो हम क्या करेंगे? छोटा सी particle लेंगे dm का. इसका distance r है. For this particle, about this moment of inertia will become. छोटे particle के लिए moment of inertia will become dm into r square.
but since I need it for the rigid body, I'll integrate this whole equation. तो ये हो जाएगा I an integration of dm r square for the whole rigid body. This is the method how you do it. Okay. After this, they are telling you to learn some moment of inertia of some bodies which I'll be dealing with. Okay. Can I go to the next slide? Yes, sir. Hello. This thing. Fine. So आपके DC पांडे में ही they have given you a table for moment of inertia. I'll be discussing that. ध्यान दो. So suppose बात करते हैं रिंग की. Can anyone? I'm discussing for IC only. Moment of inertia about an axis passing the center of mass only पहले. तो रिंग के लिए moment of inertia क्या होगा IC? Come on, anyone? Hello. mr square. mr square, mass radius square. डिस्क के लिए IC कितना होगा? Please reply. One. mr square by 2. 2. This thing, if you don't know, you can't do only. But a solid sphere. Solid sphere. 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr square. Hollow sphere is 2 by 3 mr square. Then we have solid cylinder. Solid cylinder is like a disc. इसको फ्लैट कर देंगे तो डिस्क ही हो जाएगा. Hollow cylinder. It is like a ring. It will be mr square, mass into radius square. ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा. Thin rod. It is ml square by 12. L is the length. Okay. Yes or no? Hello. Hello, hello, hello. Yes or no? Yes, sir. Similarly, we have a plate. Thin plate. Length L. Breadth B. Moment of inertia IC. IC will become m by 12 L square plus breadth square. ये चीजें आपको आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा रियली. इसके ओके, इसके ऊपर भी 2-3 चीजें हैं जो आपको नहीं आएगी तो भी चलेगा, बट दिस बेसिक थिंग्स यू ऑल शुड नो. ओके. और 2 चीज which I'll be discussing. For a rod, what is moment of inertia about the end? It is ml square by 3. Moment of inertia about the center is ml square by 12. About the end is ml square by 3. For a solid cylinder about this axis, it will be ml square by 12 plus r square by 4. And for a hollow cylinder about the same axis, will be ml square by 12 plus r square by 2. देखो इसको याद कैसे करते हैं. देखो ml square by 12 तो दोनों में है, ये r square by 2 है ना यहाँ पर, तो इधर और डिवाइड बाई 2 कर देना तो ये 4 हो जाएगा. और यहाँ पर ml square by 12 तो कांस्टेंट ही है, ये r square है ना, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देने का तो r square by 2 हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर? हेलो, हेलो, यस और नो?
तो जो मेन है उसको Yes. डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आ जाएगा. दैट विल बी द बेसिक थिंग. यू गेटिंग इट राइट? So this is how we deal with moment of inertia. Now इसके आगे बढ़ते हैं. This thing you should know. इसके बिना काम नहीं होगा. Really, I'm telling you. Okay. So this should be learned by heart. Okay. Next section which I'm going is parallel axis theorem. Suppose there's a rigid body. और rigid body का IC अभी याद किया हम लोगों ने. हमको ये एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमको इधर चाहिए. Let this call it IO and let the distance between them be h. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपसे क्या कह रहा है कि I नॉट एनी रैंडम पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए will become IC plus mass of the body into distance between the two parallel axes. ये आपको चाहिए. अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी रिजिड बॉडी. इसका IC पता होना चाहिए. Okay, that sums we'll be doing so that you all can understand. Similarly, we have another theorem called as perpendicular axis theorem. So there is a square lamina. Suppose there is a lamina, 2D lamina. There are three axes which are passing. X-axis and Y-axis are lying in the plane, and Z-axis is perpendicular to the plane. So moment of inertia about Z-axis, which is perpendicular to the plane, is sum of two moment of inertias of the axis lying in the plane, and all are passing through the same intersection point. All are passing through the same intersection point. So moment of inertia about an axis perpendicular to the plane is sum of moment of inertia of the axis lying in the plane, and all are passing through the same point where the perpendicular axis is cutting the lamina. Hello, are you understanding? Hello. This is valid for a 2D body. 2D lamina. Clear है ना? हेलो. अगर 2D है तो थर्ड एक्सिस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सिमिलर थिंग if I tell you, now I'll do applications of this thing. Suppose if I tell you for a ring, ध्यान देना अभी सब लोग. बाबा हेल्प मी आउट. रिंग का IC कितना होता है? अभी किया था हम लोग ने. रिंग का IC कितना था? MR square. MR square. If I need रिंग का IC तो पता है. I need moment of inertia about an axis tangent perpendicular to plane. Tangent perpendicular to plane. Can anyone tell me what is the distance between the two parallel axes over here? R. So according to perpendicular axis theorem, can I say I naught will become IC plus mass into distance square? So IT perpendicular will become IC. IC हमको मालूम है is MR square plus mass into distance square. I tangent perpendicular is going to become 2MR square. Are you getting it? Hello. Third, if I need moment of inertia about the diameter, यही रिंग, यही IC, और diameter is this ID or this ID. So we can see there are two axes lying in the plane and one perpendicular to the plane. So I'll apply perpendicular axis theorem. IZ is IC, which will become ID plus ID. 2ID will become IC, so ID is going to become IC by 2. But IC is MR square, which we know by 2 इधर से आ जाएगा. Lastly, for this will become moment of inertia tangent parallel to plane.
Tangent parallel to plane मतलब ये रिंग है, and if I need moment of inertia about the tangent parallel to plane, तो इससे parallel रहेगा ID रहेगा, ये I tangent parallel है और distance तो आ रही है, तो अगर इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जाएगी तो इट विल बिकम I tangent parallel will become ID plus mass into distance square, but distances are ID यहाँ से लेना है, will become mr square by 2 plus mr square. अरे भाई ये आता है कि नहीं आता है किसी को? हेलो, you know it or not? Hello, we have done this in the theory, right? Hello, hello बेटा, ये तो आना चाहिए ना. This was done. Okay, I have taken test also. So what is the basic criteria about this thing? क्या IC आपको पता होना चाहिए? What is the shortcut for I tangent perpendicular? It will become IC plus mr square. What is the shortcut for ID? It will become IC by 2. And what is the shortcut for I tangent parallel? It will become ID plus mr square. Hello, hello. अच्छा, ये चार फॉर्मूलास हमको याद रखना है. Can anyone tell me each and everything for a disk? What is IC for a disk? चलो जल्दी, हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको देखकर सीधा बताओ. What is IC for a disk? हेलो. mr square by 2. तो डिस्क के लिए अगर हम बात करेंगे, ये है mr square by 2. ये कितना हो जाएगा? आई टेंजेंट परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 by 2 mr square. 3 by 2 mr square. ID कितना हो जाएगा? ID mr ID square by 4. mr square by 4. एंड आई टेंजेंट पैरेलल कितना हो जाएगा? Come on man, come on. Yes, yes, ID plus mr square ना, तो ID तो we know is mr square by 4 plus mr square will become what? Come on I by man, 4 mr square. 4 mr square. This is for a disk. This is for a disk. Are you all understanding? Hello. अच्छा ठीक है. Can anyone tell me what will happen for a solid sphere? IC कितना है solid sphere का? 2 by 5 mr square. Solid sphere का tangent कितना हो जाएगा? Tangent 7 by 5 mr square. कितना हो जाएगा? 7 by 5 mr square. और ये दोनों नहीं होते हैं, because there is no diameter. Diameter and IC are the same ना. हेलो बाबा, solid sphere के अंदर the IC is also the same and diameter is also the same. यही तो diameter है. And tangent perpendicular parallel नहीं होता, एक ही tangent होता है. Yes or no? हेलो, हेलो, yes or no? तो अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊं, सबसे पहले रिंग का बनाते हैं. डिस्क, सॉलिड स्फीयर, hollow sphere and then rod. चलो, you will tell me IC, I tangent perpendicular, ID, I tangent parallel. चलो शुरू हो जाओ. रिंग का चलो जल्दी जल्दी रिंग के बारे में बताओ. फास्ट फास्ट ना, आई वांट इट. कम ऑन प्लीज. हेलो, व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस? अरे टेल मी मैन, कितना हो जाएगा ये? दिस इज IC plus mr square ना, this is IC by 2 ना, and this is ID plus mr square. Do you understand or not? Disk के लिए it is mr square by 2 and this is plus mr square will become 3 by 2 mr square. This is mr square by 4 and this is 5 by 4 mr square. Solid sphere is 2 by 5 mr square and this is 7 by 5 mr square, और ये दोनों होते ही नहीं है. Hollow sphere के this is 2 by 3 mr square
and this will be 5 by 3 mr square. ये दोनों नहीं होता है. Rod का IC होता है ml square by 12. And about the end, this is not tangent, this will be end. I about the end is ml square by 3. Hello, are you all there? Hello beta, Hana bolo, yes or no? Can I go to the sums now? Can I go to the sums? Yes. Baba. Hello. Fine. Yes, sir. Now I'll discuss something called as एक और एक चीज बाकी है, that is called as radius of gyration. Suppose there is a rigid body and इस axis पर उसका moment of inertia is I, which is given. Now what do? I keep the same axis, but I reduce this mass into a particle. Hypothetically, I am reducing the mass into a particle situated at a distance of k. So can anyone tell me what is moment of inertia of this particle about this axis now? Jaldi bolo. Hello यार, single particle का moment of inertia क्या होता है about a given axis? बोलो. m into k square ना, where this I and this I match. तो पहले क्या था? I was given for a body, rigid body के लिए I is given. I hypothetically convert this into a particle such that it is kept at a distance of k from the axis of rotation. So my I will come mk square according to particle formula. Yes or no? So this k, this I and this I are matching. हाँ बेटा, मतलब इसका वैल्यू अगर x है तो इसका भी वैल्यू x होना चाहिए. तो ये जो k है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? I is mk square, so k will become root of I by m. Can I say k is proportional to root I? Can I say a greater value of k, a greater value of this k will indicate more I, and if there is more I, there is more resistance to rotational motion, and a smaller value of k will indicate that mass is distributed near to the axis of rotation, and if mass is distributed near to the axis of rotation, moment of inertia will be less, so it is easy to start and easy to stop. You knew the significance of moment of inertia ना बेटा? अगर moment of inertia ज्यादा रहेगा, so it is difficult to start and difficult to stop. And moment of inertia अगर कम रहेगा तो it is easy to start and easy to stop. Hello, hello Baba, yes or no? So this is how you do radius of gyration का concept. अच्छा, कोई भी चीज को अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, मेरी बात सुनो अभी ध्यान से, कोई भी चीज का रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको फाइंड करना है, मतलब मैं बोलूं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहेगा अबाउट दिस एक्सिस, तो यू विल इक्वेट दिस वैल्यू विद एम के स्क्वायर. मतलब इफ आई टेल यू व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट आईसी फॉर अ रिंग, तो यू विल इक्वेट दिस आंसर विद एम के स्क्वायर. तो व्हाट विल बी के का वैल्यू इक्वल टू आर ना. हेलो हेलो, yes or no? अच्छा, if I tell you what is radius of gyration for a ring about I tangent perpendicular, so what will you do? You will equate this answer with mk square. ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना है? √2r. मतलब रेडियस ऑफ gyration फॉर दिस एक्सिस इज √2r. अच्छा, एक शॉर्टकट बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए. दिस इज बेटर. k will become root of coefficient into r. ओके, एक्सेप्ट अ रॉड. रॉड के लिए l हो जाएगा, वो बाद में देखते हैं हम लोग. इस चीज के लिए अगर हमको k निकालना है तो भी रूट ऑफ कोएफिशिएंट इनटू r.
कोई बता सकता है इसका कोएफिशिएंट कितना है? हेलो, हाँ। इसके लिए हाफ, तो और भी k फॉर दिस, k 1 क्या by रहेगा? root 2r. 1/√2r फिनिश्ड। इसका कितना रहेगा k? कम ऑन मैन, फास्ट, कम ऑन प्लीज। Root 3 by 2r. इसका k कितना रहेगा? r/√4, दैट इज 2 ना। इसका k कितना रहेगा? √5/4r। यस और नो सर? हेलो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। Again a trick only, rather than equating this with what is the conventional method, आप इसको इक्वेट करो एम के स्क्वायर से, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करो, और अगर शॉर्टकट चाहिए तो इट विल बिकम दिस थिंग. So I hope we have completed with the concept of moment of inertia. If you have seen the video ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा comparatively. I am starting with the sums which deal with moment of inertia. There are 20 questions. I'll be doing some and you all do. Next time we'll continue with the next part of it. ठीक है ना? So we are starting with 9.1 introductory exercise. Question number 1. Pay attention. A car moves on a circular road that describes equal angles about the center in equal intervals of time. अच्छा, ये तो सर्कुलर मोशन का सम है यार. It describes equal angles in equal intervals of time का मतलब क्या है? हेलो, equal UCM. it's UCM, मतलब ओमेगा is constant ना, बराबर. ओमेगा is d theta by dt ना, which is constant ना. Yes or no? हेलो, as Rishi told, it is UCM. Very good. So which of the following statement is true for velocity? इधर क्यों क्वेश्चन पुट किया है यार, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन. ये गाड़ी जा रही है ऐसे. Can I say what will be the answer? What will be the answer? Come on, fast man, tell me the answer. You know circular motion में क्या आंसर है? D. D. Magnitude of velocity is constant, but the direction will change. Obviously, direction will change because vector है. Circular motion का question. I will do question number. वही circular motion के सब questions है. Question number 4 पर आता है. Circular motion तो आप लोग कर ही सकते हो. ये भी easy है. ये भी circular motion है. The angle turned. They are just making the base for rotational motion. That's why I think feel. थीटा दिया हुआ है, आपको अल्फा पूछा है, कैसे निकालेंगे? हेलो, सबसे Double पहले derivative. डबल डेरिवेटिव. थीटा इज गिवन एज थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 इनटू टी स्क्वायर. इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा बाई डी टी, दैट विल बिकम ओमेगा ना, विल बिकम 0 प्लस थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 टी. फिर और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज अल्फा विल बिकम डी ओमेगा बाई डी टी. That could also be written as d2 theta upon dt square. That is double derivative of this thing is 0 ka 0 plus 0 plus 2 theta 2 is the answer. I hope you all are understanding. Hello, 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 hello. Yes or no? So they are just making the basics for rotational motion strong by giving you basic sums of circular motion that you all can manage. That you all can manage. Actually, I wanted to do sums based on moment of inertia. Okay. So ठीक है, थोड़े एक दो sums I will also be helping you out with this thing. Question number 7 पर आता है. These are all circular motion only. I think till 10 there are circular motion. 11 से they are starting with rotational motion. Okay, देखो. Question number 7. The angular velocity changes from 100 to 300 in, so ये रेडियन पर सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली. द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ओके, यस सर, टेल मी, कैसे फाइंड करना है? हेलो, if you need number of revolutions, how to find? Find theta. Omega 2
हाउ टू फाइंड थीटा, बोलो हाउ टू फाइंड थीटा बेटा. Omega final square is omega initial square plus 2 alpha theta. और अल्फा ही पता नहीं है ना आपको, तो अल्फा पता है क्या? कैन आई से ओमेगा You 2 find इज it. ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी ओमेगा 2. Okay, so this will be 2 pi n2 2 pi n1 alpha t. 2 pi n2 is given as 300. ये n है. This is 2 pi n1 is given as 100. Alpha into t is 10. So this is 600 pi minus 200 pi is equal to alpha into 10. तो 10 का 0 and 0 cancel हो गया. 60 pi minus 20 pi is 40 pi. is alpha, ये alpha मिल गया. Now next, omega 2 square is equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. या तो इससे बेहतर है आई यूज दैट थीटा का सेकेंड वन. थीटा इज ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा 1 is 2 pi n1, t is 10, half alpha is 40 pi into t square is 10 का square will become 2000 pi plus 20 pi into 100, 4000 pi आएगा. थीटा मिला. दिस इज फर्स्ट पार्ट. दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड थर्ड. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बेटा? theta by 2 pi, that is 4000 pi. 2000 will be the answer. Okay, hello, yes or no? Hello, yes or no beta? Yes, sir. Now the last question based on circular motion, since it is given. It's question number 10 I am doing. It's a very nice question based on seconds diagram. You know that seconds diagram follows also in rotational motion. आपको एक बात बताया था काइनेमैटिक्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड में इट फॉल्स बाय हाउ मेनी मीटर? हेलो, सेकंड में इट फॉल्स बाय, याद है? थर्ड सेकंड में इट फॉल्स बाय, डू यू नो इट? हेलो, Yes, sir. व्हाट इज कांस्टेंट थ्रू आउट? क्या कांस्टेंट है? जब बॉडी नीचे गिरेगा तो कैन आई से ग्रेविटी इज G. कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. दिस वाज इन 1D मोशन, याद है ना सबको? Now on the basis of this I'll do angular motion. सपोज एक डिस्क घूम रहा है. Okay, disk is rotating. What is constant बेटा? भाई क्या है इधर? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इधर का क्या कांस्टेंट होना चाहिए? हेलो, यस और नो? हेलो, बोलो. So can I say in the first second, suppose it rotates this in the second, it rotates this in the third second. ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है. कोई बता सकता है θ1 टू θ2 टू θ3 का रेशियो कितना है? जल्दी बताओ. हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये वही चीज है यार, मोशन तो नेचर तो सेम ही है ना. तो चाहे वो एंगुलर मोशन हो, 1D मोशन हो, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, वहां पे जी कांस्टेंट है, तो सेम रिलेशन प्ले करेगा ना.
नेचर लव सिमेट्री इफ यू रिमेंबर. चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. The wheel which is initially at rest is subject to a constant angular acceleration. मतलब अल्फा कांस्टेंट है. It rotates through 15 degree in t seconds. Okay. t सेकेंड मतलब मैं फर्स्ट सेकंड पकड़ लेता हूँ. कितना डिग्री वो घूम गया? 15 डिग्री. Yes or no? So the increase in angle which it rotates in the next 2t seconds. Next 2t seconds मतलब सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड. तो कोई बता सकता है कि ये कितना रहेगा सेकंड सेकंड का? हेलो, अगर ये पहले 15 डिग्री है तो सेकंड वाला कितना रहेगा? 45. 45. और तीसरा वाला कितना रहेगा? अरे 1:3:5 ना. कम ऑन मैन. 5 into 15 कितना होता है? 75. यस और नो? हेलो, यस और नो? Yes, sir. आई नीड टोटल 2t सेकंड्स में, मतलब ये पूरा मांगता है. ये पूरा कितना हो गया 2t सेकंड में? नेक्स्ट हेलो हुआ ना 120 डिग्री. देखो तो. Yes, sir. ओके, अभी आप अगर डीसी पांडे का बुक देखेंगे तो पूरा बड़ा सॉल्व किया है उसने. डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार बोलो ना. ओके, यहां पर अगर आपको पूछेगा ना 1D में तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स बोलेगा ना. मतलब ही इज आस्किंग अबाउट दीस 2 सेकंड्स एक्चुअली. ट्रायंगुलर मोशन में यहाँ पे नेक्स्ट 2t सेकंड्स में पूछ लिया. बाबा टेल मी. हाँ ना बोलो. यस और नो? Yes, sir. So this is important ना. This question I don't think so we have done it in circular motion. Good question came up. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो बाबा स्टार्ट करेंगे. 20 क्वेश्चंस है. आप लोग हेल्प करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलो, एनीवन कैन टेल मी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. एनालॉगस टू मास एंड रोटेशनल मोशन इज व्हाट? कम ऑन फास्ट मैन. हेलो. अरे बाबा टेल मी व्हाट इज इट? Mass is Moment of analogous inertia. moment of inertia. That is A. Okay, so this is there. Question number 13. A particle of mass 1 kg is kept at 1, 1, 1. The moment of inertia about z axis. So ध्यान देना बेटा. Z axis here. There is 1 kg kept in air at 1, 1, 1. Moment of inertia about z axis. Can I say moment of inertia about z axis of a single particle is mass into distance square from the respective axis? तो मुझे पता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस 1 मीटर है. x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है. सही है. तो z एक्सिस से डिस्टेंस कितना रहेगा? हेलो, कैन आई से z एक्सिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन? हेलो, कैन आई से दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस? यस और नो? हेलो, हेलो बोलो. यस और नो? सो इट विल बी 1 into डिस्टेंस. डिस्टेंस विल बी, ये अगर ट्राइंगल है तो ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा ना. विल बी रूट ऑफ 1 square plus 1 square of that. So what will be moment of inertia about z axis? ये हो जाएगा 2 का रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा. Did you understand? हेलो. Moment of inertia about z axis मतलब indirectly they asking you moment of inertia about the origin. याद रखना ये चीज, because z axis is passing through the origin and we don't require distance from the z axis. We don't require the z coordinate. I'm very sorry. We don't require this thing. We require this thing and this thing. Hello. Hello. Yes or no? Yes, sir. When we are talking about z axis, we'll talk about xy plane.
याद रखना ये सब चीजों को, थोड़ा मैथमेटिक्स है ना आपको आना चाहिए. When we are talking about z axis, we talk about xy plane. देखो मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी से बताता हूँ. सपोज ये एक टेबल है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. और यहाँ पर हवा में एक पार्टिकल रोटेट जा रहा है हवा में 1,1,1. बट अगर आपको जेड एक्सिस से मांगता है तो यू विल बी ओनली इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ना. हेलो बाबा, हेलो, अभी बोलो सही है. हेलो बेटा, yes or no? Yes, sir. So this is how, if you don't understand, you tell me, I try to prove by another method rather than just. Okay, ध्यान देना. Okay, चलो हाँ, next 14th. The radius of gyration of a sphere about its tangent. So can anyone tell me what is moment of inertia for a solid sphere about the tangent? जल्दी बोलो. 7/5 mr square. उसका radius of gyration क्या रहेगा? You know the shortcut. Come on man, fast. Root 7/5 r. ये आंसर है, ठीक है ना. प्लीज सी माई वीडियोज. वो फ्रेशली रिकॉर्डेड लास्ट ईयर पैंडेमिक के वीडियोज है. ओके तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हैं, तो थियरी तो आपको एकदम इजी आ जाएगा. न्यूमेरिकल्स आई विल बी डूइंग ओवर हियर. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वीडियोस देखना पड़ेगा. ओके देन रोटेशनल मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स विल बी ओवर, देन वी विल गो टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटा. ओके जिस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी है वो ये चैप्टर है. ये चैप्टर है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है. दो चैप्टर में बराबर मेहनत कर लो. ओके चलो, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर और डेंसिटी रो. ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर और एन एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास. जल्दी जल्दी. आईसी कितना है? हेलो, आर यू एग्रीइंग बाबा, यस और नो? यस सर. अच्छा मास को कैसे लिखेंगे? मास को कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू आर स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? 8/15 रो पाई आर फाई. रो पाई आर फाई. अच्छा अच्छा, अभी इधर देखो ये ना, ये 176/105 और ये सब दिया है. तो 8/15 कौन आएगा यहाँ पे? कैंसिल करके 8/15 किस में आएगा? थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करना B. पड़ेगा. बी में आएगा ना बेटा. अरे भाई ये कुछ मतलब वो नहीं है. दिस इज ऑल्सो 8/15 ओनली. यस और नो? यस और नो बेटा? आंसर इज बी ओनली. दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग यू विथ मैथमेटिक्स. बाबा टेल मी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. One circular ring and one circular disc both have same mass and radius. The ratio of the moment of inertia about the center. चलो रिंग का moment of inertia क्या होता है about the center? क्या होता है? mr square. डिस्क का क्या होता है? mr square by 2. और ये बोल रहा है क्या? I1 to I2 चाहिए, मतलब this by this. What time pass question. दोनों का मास और रेडियस सेम है, तो mr square and mr square by 2. जरा 2:1. And believe me, these all questions are asked in the exam also. Okay. मतलब लोगों को इतना भी नहीं आता है करने के लिए. That okay is a shame.
Question number 17. The moment of inertia of a solid sphere of mass m and length 2r and radius about an axis passing through the center and perpendicular to the axis is I1, and about an axis passing through one end of the cylinder and perpendicular to the axis is I2. Okay, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर बनाया, perpendicular to the length उन्होंने I1 लिया, and passing through the end I2 लिया है. बराबर है क्या? हेलो. And length is 2r. Length is 2r. So can I say this will be r? Can I apply parallel axis theorem? Beta, parallel axis theorem क्या बोलेगा? Hello, come on, please help me out with parallel axis theorem, man. Please. Hello, hello, hello. Hello, parallel axis theorem. I2 क्या रहेगा? I1 plus MH square. mh square. But mr square हो जाएगा ना? Yes or no? But h is r ना? So what is I2 minus I1? I done, man, done. Look at the answer. A. Finished? Finished? Hello? Yes, sir. Fine. 18th one. 18th and 20 I'll do. Finished. If I1 is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to the plane, कितना रहेगा? कितना रहेगा? Come on. Rod का moment of inertia क्या होता है? बोलो यार. ML square by 12. ये हो गया I1. I2 is the moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to the plane of the ring and passing through the center by bending the rod. तो ये क्या बोला? ये जो rod है ना length L का, उसको मैंने bend करके ring में बना दिया. Can I say ring का तो radius r होता है? Can I say L is 2 pi r? अरे भाई. And now you know what is moment of inertia of the ring about axis passing center is mr square. But r यहां से क्या मैं ले सकता हूँ? It will be L by 2 pi. इसको अंदर डाल दो तो will become m. R square will become L square by 4 pi square. This is I2. This is I2. That is ml square by 4 pi square. They are asking what is the ratio of I1 to I2. कोई बड़ी बात नहीं है, simple है. I1 is ml square by 12. And this is ml square by 4 pi square. ml square कट गया. 4 3s are 12. So it will become pi square by 3. Hello? Hello? Yes or no? Baba bolo. Hello? Yes or no? Clear है? Okay. So this is all the stuff. Question number 19 बहुत फास्ट होगा. अगर आपको थियरी आता रहेगा ना तो ये बहुत फास्ट जाएगा. Okay? And if you don't know the theory, you keep on thinking what is moment of inertia. The optics lecture today is optional as it clashes with math lecture. You can see the video. Okay? You can see the video, please. Question number 19. Moment of inertia of a rod of mass m and length L about an axis passing through one of its end is L. If 1/4 of the length is cut away, 1/4 of the length is cut away, the moment of inertia of the remaining rod about one end. अच्छा चलो इधर देखो. Suppose एक rod है, mass m है, length L है. Can anyone tell me what is moment of inertia about this axis? जल्दी बोलो. जल्दी fast. ml square by 3 है. अब ये कह रहा है 1/4 of the length को कट कर दिया, तो मास कितना हो गया? भाई लेंथ को कट करेंगे तो मास भी कम होगा, मास सेम नहीं रहेगा. 1/4 of the length is cut, मतलब 1/4 of the mass is also cut ना, because it is uniform rod ना. Hello, so how much is the mass left now? 3/4. 3/4 of the mass is left. m को m नहीं रखना, ये गलती करते हैं. And L also has become कितना?
3/4. L. Can anyone tell me what is moment of inertia about this end? Now this end will become ml square by 3, but m कितना है? 3 by 4 m. L has also become 3 by 4 L by 3. So this is I dash. So can I say I dash is going to become 3/4 m. ये 3 3 कैंसिल ही कर दो, तो ये 3 तो चला गया, ये हो जाएगा m by 4 into 3 का स्क्वायर 9, 4 square 16 into L square. So 9 ml square by 64. This is I dash. But they are asking you I dash in terms of I. तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो I dash upon I will become 9 ml square by 64 by ml square by 3. ml square वैसे ही कट गया. 3 9 3s are 27 by 64. और ये I इधर से इधर आ जाएगा, तो I dash is going to become 27 by 64 I. हेलो yes or no? Yes, sir. ये चीज है, ये एकदम इजी बातें हैं. ओके, इट इज नॉट अ बिग डील, और यही चीजें नीट में आती है. दिस इज मैनेजेबल विद इन 40 सेकेंड्स. बराबर है ना भाई? हेलो, इट इज मैनेजेबल विद इन 1 मिनट. अगर आप स्लो भी करेंगे ना तो भी आ जाएगा, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मास m नहीं है, मास इज बिकम 3/4. क्वेश्चन नंबर 20, एंड देन आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल वॉच द वीडियो एंड कम. बेटा बहुत फर्क पड़ेगा. ओके, ये 2 चैप्टर आप लोग को ओके कोऑपरेट करना पड़ेगा. देन अगेन वील कम बैक. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज वेरी इजी, करंट एंड ऑल दैट स्टफ वो सीरीज पैरेलल ही करना है. 3 thin uniform rods of length L and mass m are placed along XYZ axis. So this is XYZ axis, X axis, Y axis, Z axis. So there are 3 rods which are placed over here. Just draw it. There's one rod which is this, a second rod which is placed this way, the third rod is placed this way. Hello, are you all getting it? Yes or no, beta? Hello. The moment of inertia about Z axis. हो मजा आएगा, सब लोग इधर मेरी बात सुनना. ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, ये रॉड 3 है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस मांगता है, तो रॉड 1 को पकड़ते हैं. रॉड 1 ये है, ध्यान से, यहां तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा. Z axis is this way. Can anyone tell me what is I1 for this rod? अलग से, come on, help me fast. Hello, कौन बताएगा? बाबा, tell me for first rod. ml square by 3. ml square by 3. Okay. अभी सेकेंड नंबर रॉड के बारे में बात करते हैं. यही है ना? क्या रहेगा? बोलो 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 वो जल्दी जल्दी. Same. Because this is about end only ना. अब 3 के लिए बहुत मजा आएगा. 3 इधर है, एक्सिस इसके ऊपर है. कितना होता है इसको पता है क्या? हेलो, always remember, if there is a rod and if you are rotating about this axis only, moment of inertia is 0. Why? Because what is the general formula for moment of inertia? Mass into distance square. But there is no distance only, it is lying on the axis ना. हेलो हेलो भाई, एक तो ये थिन रॉड है और वो एक्सिस के ऊपर है, तो अगर हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम 0. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइंग ऑन दैट एक्सिस विल बिकम 0. यस और नो? हेलो, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? बिकॉज एम आर स्क्वायर है ना, आर तो है ही नहीं. हेलो, यस और नो? सो व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 plus I2 plus I3. I3 तो 0 है, ml square by 3 plus ml square by 3 will become 2 ml square by 3. So 2 ml square by 3. Yes or no? Hello, Baba, tell me yes or no. Okay.
अच्छा, now I'll deal with one question. ध्यान देना सब लोग अभी जरा. Suppose if I make a, अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज सीख लो. एक रॉड है, moment of inertia about this axis is 0. Suppose there is another axis at a distance of x. I want to find moment of inertia about this axis. So moment of inertia about this axis will become, parallel axis theorem लगाएंगे, will become ये I naught IC पकड़ते हैं इसको, IC plus mass into distance square. But इसका सामने वाला IC तो 0 है, plus mass into distance square is x square. So I is going to become mx square. Yes or no? Hello? Hello? Yes, sir. ये याद रखना, ठीक है? याद रखना. अच्छा, एक last question, extra question which I am telling you. Suppose there is a square and I place 4 rods over here. Make a square of length L. I want to find moment of inertia about this axis. ये 1 rod, 2 rod, 3 rod, 4 rod. चलो शुरू करते हैं. और सबका लेंथ L है. तो अगर हम 1 rod के बारे में बात करेंगे तो what is the moment of inertia about that axis? Hello, please help me out of fast. Come on, please tell me. कितना रहेगा 1 का? 0. 0 रहेगा. 2 का कितना होगा? 2 2 2 2 2 2. Come on. Axis ये है ना? Hello, tell me. What is I2? What is I4? Come on, man, please fast. Come on. What is I4? Axis ये है ना? कितना रहेगा I4? And what is I3? Come on, I'm not going to say this. What is I3? Axis इधर है. ml square. हाँ ये because ये लेंथ L है ना. यहाँ से L डिस्टेंस है ना. ये बोलो. ये I3 हो जाएगा. ML square. This was star. बाकी ये सबको जोड़ देंगे तो there will be the net moment of inertia about that axis. Getting it now? Okay. So this is how they ask you. Moment of inertia more or less we'll be doing and taking it together. Next time you have to watch the video and come for Wednesday. And chalo. Thank you very much. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.